हेलो। सो नेक्स्ट सेशन की हम शुरुआत पहले कर चुके थे, थोड़ी देर के लिए पॉज हुआ था क्योंकि हमारे माननीय वाइस चांसलर के साथ में ग्रुप फोटो था, जिसका भी अब ग्रुप फोटो हो चुका है। तो मैं जजेस का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना चाहूंगी, उसके बाद में क्वालिफाइड कंट्रीज का नाम जो है वो मैं घोषित करूंगी। सो आज के हमारे इस सेकेंड सेशन राउंड के 2 जजेस हैं, उनका मैं क्या चित्रण करूं, वो तो खुद अपने आप में ही विश्लेषित हैं। पहले हमारे प्रोफेसर भारत भूषण सर जी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस हैं, एंड सेकंड हमारे डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार जी हैं, जो कि सेम डिपार्टमेंट से हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। तो दिल थाम के बैठिए। अब आपके लिए फर्स्ट क्वालिफाइड जो विनिंग कंट्रीज हैं, उनका मैं 1 बाय 1 नेम अनाउंस करने जा रही हूँ। तो पूरी जजेस की सहमति के साथ जो डिसीजन गया है, पहली विनिंग कंट्री है टर्की। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नॉट द विनिंग, यहाँ सामने आ जाइए। संदीप जी, डिस्प्ले नहीं हमारा चल रहा है। आईटी टीम, प्रदीप जी सॉरी। And वो थर्ड विनिंग कंट्री है यूएस। जोरदार तालियों से स्वागत करिए यूएस का। फोर्थ क्वालिफाइड कंट्री है हमारी यूरोपियन यूनियन। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। फिफ्थ क्वालिफाइड कंट्री रशिया। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सिक्स्थ इंडोनेशिया क्वालिफाइड कंट्री। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सेवेंथ जापान। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। फिर हमारी इसी क्रम में है इंडिया। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। एंड ब्राजील। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तो ये हमारे नेक्स्ट राउंड के क्वालिफाइड कंट्रीज हैं। बाकी जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, उनके लिए जोरदार तालियां। अब आप लोग कृपया अपना अपना स्थान ले लीजिए। नेक्स्ट सेशन राउंड भी आपका सिमिलर ही रहेगा कि पहले हेड ऑफ द स्टेट्स, मैं आपको रूल बता देती हूँ। हेड ऑफ द स्टेट्स जो है वो स्पीच रिप्रेजेंट करेंगे एंड उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर अपने स्पीच का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो भी क्वालिफाइड कंट्रीज हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। अब मैं डॉक्टर रितु बख्शी मैम को बुलाना चाहूंगी कि वो प्रोफेसर भरत भूषण सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बस अभी तुरंत।
जोरदार तालियों से स्वागत करिए मैडम एंकर का। अब मैं विजेंद्र सर को बुलाना चाहूंगी एंड दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी। अब मैं विजेंद्र सर को बुलाना चाहूंगी एंड दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर रितु बख्शी मैम से, प्लीज उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें और उनका स्वागत करें। इसके बाद अब इस सेशन को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे 5 कंट्रीज हैं, टर्की, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन और रशिया, उसके हेड ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव अपना फ्लैग लेकर के दोबारा मंच पर आसीन हो जाएं। अमृतांश भारती टर्की के लिए, यूके के लिए नंदिनी शर्मा, यूरोपियन यूनियन के लिए नाहिला तबस्सुम, यूएस के लिए हर्ष प्रताप सिंह हड्डा एंड कोई बात नहीं, अमृतांश का हम नेक्स्ट उसमें करा देंगे। तो एक और कंट्री प्लीज आ जाइए, इंडोनेशिया, हेड ऑफ द स्टेट सबसे पहले मैं यूके की रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ द स्टेट नंदिनी शर्मा से कहना चाहूंगी कि वो अपने नेक्स्ट राउंड की स्पीच स्टार्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए नंदिनी शर्मा का। Good afternoon, everyone. I, Nandini Sharma from Department of Mathematics, on the behalf of Rishi Sunak, will present a speech. I was starting with facilitating global consensus on the conflict prevention and peace building. The UK is actively working towards the find common ground and prevent conflict before they escalate by promoting dialogue, understanding, and empathy. They are paving the way for peaceful. Second, educatable collaboration of Global North and Global South. The UK recognizes the importance of inclusive partnerships. They are committed to ensuring that all nations, regardless of their size or sources, have an equal voice and opportunity to contribute to peace-building efforts. By fostering collaboration between the Global North and Global South, they aim to create a more balanced and effective approach. Next, regulating non-state actors, though concentrated efforts. The UK understands the impact of non-state actors such as armed groups and extremist organizations such as can have a piece on stability. They are actively working towards implementing robust measures and engaging with these sectors to migrate their negative influence and promote peaceful solutions. There are some challenges and future prospects. Some challenges include addressing deep-rooted conflicts, promoting inclusivity in peace, progress, ensure sustainable peace and post-conflict societies. Next is the global partnerships. If we are talking about global partnership, by working together, we can pool our resources, expertise, and perspective to take conflict on larger scale. This collaborative approach allows us to share best practices, learn from other experience, and leverage collective influence to promote peace building. Preventing future conflict emphasizes the significance of the addressing root cause of conflict, such as poverty, inequality, injustice, as a part of holistic approach to peace building. Next is that peace, public engagement, encourage the active involvement of citizens in the peace efforts, whether through advocacy, volunteer work, or supporting initiatives that promote reconciliation. In conclusion, the United Kingdom has a crucial role to play in the global pursuit of peace building and reconciliation. By reflecting on this history, promoting diplomacy, supporting humanitarian efforts, and engaging with the international community, the UK can contribute significantly to
ushering in an era of no war. Thank you. Thank you, Nandini. And next is US. So US से हमारे representative हैं हर्ष प्रताप सिंह हड्डा. कृपया अपनी स्पीच दीजिए हेड ऑफ द स्टेट की. जोरदार तालियों से स्वागत करिए हर्ष प्रताप. So, by continuing my speech, I am very honored to say that India, US, UAE, Saudi Arabia, France, Germany, Italy, and the European Union, which is a new member of G20, I congratulate the European Union for being a member of G20. These all countries have signed a memorandum of understanding (MOU) to establish the India Middle East Europe Economic Corridor. It is a game-changing regional investment. We have to strengthen our international law, facilitating global consensus on conflict prevention and peace building. Also, we welcome the bilateral cooperation of the India in the area of defense, trade, investment, education, health, and culture. Furthermore, USA believes that economic development plays a pivotal role in peace building. We are contributing in supporting economic growth, job creation, and poverty reduction in regions that have historically been prone to conflict. Economic stability can lead to the social stability, reducing the likelihood of violence. I think that this G20 summit in India showed that we all can still work together to solve the problems of the world. Economy is facing problems because of the climate crisis and other issues, wars happening at the same time. As the US, we pledge to remain steadfast in our commitment to promoting peace and stability globally. We believe that investing in education, economic opportunities, and cultural exchange can foster mutual understanding and bridge divides. Moreover, the US is committed to upholding human rights and promoting democracy worldwide. These principles are the bedrock of peace building as they ensure that individuals have a voice in their governance and that their basic rights are protected. Also, I support in India, like in recent times in Himachal Pradesh, of one of the state of India, there was a natural calamity. So I support India and I urge all the nations to support the India in that calamity. With this, I end my speech with a message to the world for building peace and helping each other for sustainable development. Thank you. Thank you. Please whistling के लिए कोई coordinator आगे आ जाइए. उज्जवल, कोई बात नहीं, कोई और प्लीज कोऑर्डिनेट कर दीजिए whistling को. उज्जवल, where are you? Whistling. उज्जवल प्लीज अपनी कार्यभार स्थिति बताने का रखिए. टाइमिंग हम 3 मिनट का वैसे हमारा टाइम था. Okay, minimum 2 and maximum 3 minutes you are just having. So next मैं आपका जो हमारे country, हाँ 2 minutes. So minimum 2 minutes you are just having. Okay. Sorry, maximum 2 minutes, minimum 1 minute. Minimum 1 minute, maximum 2 minutes. Minimum 1 minute and maximum 2 minutes. So अब next है आपके EU के representative जो कि नाहिला तबस्सुम है. नाहिला तबस्सुम का जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनके head of state speech के लिए. Good afternoon, everyone. I'm Nahila, student of Zoology Department, representing as a president of European Union. G20 leaders meets at New Delhi, 2-day summit hosted by Prime Minister Narendra Modi, India, and the President of the European Union, Charles Michel, under the theme One Earth, One Family, One Future, discuss some issues, that is Russia war against Europe, strong and sustainable development, climate and environment, digital transition, gender equality. But due to the lack of time, I'm discussing only the Russia war against Ukraine because European Union played a key role to maintain peace. G20 leaders recall that in line that the UN Charter all states must refrain from threatening or using of force or seeking territorial acquisition
against the territorial independence of any state. European Union also welcome unprecedented and constructive initiative that support a comprehensive, just and durable peace in Ukraine and uphold all the principles and purposes of the UN Charter. Today's era must not be a war. G20 leaders call for the cessation of military destruction or other attack of food and energy infrastructure. They are also calling for the implementation of initiatives such as Black Sea Grain Initiative to ensure immediate unlimited deliveries to grain. Further, United Nations highlights the negative impact of the war in Ukraine, especially on developing countries with regard to global food and energy security, supply chain, macro-financial stability, inflation, and growth. European Union and its member states strongly condemn Russia's brutal war of aggression against Ukraine. On February 9, 2013, European Union President said Russia must stop this aggressive war immediately. The European Union will stand by Ukraine with its steadfast support for as long as it stays. The European Union has shown unity and strength and provide Ukraine with humanitarian, political, financial, and military support. On February 3, 2023, said President that the European Union will be with you and your people tomorrow and for long as it takes. We will be the right of yourself to rebuild modern, perfect Ukraine family and toward a common European cause. The European President play a key role to maintain peace in Ukraine and Russia war and continuously support the Ukraine. Thank you so much. Thank you, Nahila. Next is Russia, and Russia को represent कर रहे हैं राहुल सिंह. So जोरदार तालियों से स्वागत करिए राहुल सिंह का. By continuing my speech, it is an honor to address these estimates gathering today to discuss the crucial economic ties between Russia and India, two nations that share a long-standing history of cooperation and mutual respect. The economic relation between Russia and India has consequently demonstrated and growth over the years. Both countries have their contemporary strength to partnership that transcend and mere transactions and amenities and spirit of true collaboration. India and Russia witnessed significant progress in sectors such as energy, defense, and space exploration. The Indo-Russian Energy Cooperation have been a strong relationship with both nations, benefiting from strategic investments and joint ventures in oil, gas, and nuclear energy. While acknowledging these achievements, it is an imperative that we recognize the untapped potential that still exists in our economic ties. There are vast opportunities for increased bilateral trade and investment and collaboration in emerging sectors such as information technology and green technologies. As we look toward the future, it is clear that innovation and entrepreneurship should be at the heart of our economic agenda. By encouraging joint ventures and research collaboration, we can unlock new avenues of growth and prosperity of both of our nations. In conclusion, the economic ties between Russia and India are not just transactions on a balance sheet, but they are testament to the friendship and shared these two nations expanding their business. Thank you. Thank you, Rahul Singh. Now, मैं बुलाना चाहूंगी इंडोनेशिया के हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो कि हैं अंकित मिश्रा. So जोरदार तालियों से स्वागत करिए अंकित मिश्रा का. शुभ संध्या. मैं अंकित मिश्रा इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो के प्रतिनिधि के रूप में शांति निर्माण और सुलभ युद्ध रहित युग की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं. इंडोनेशिया की नीति 100 फ्रेंड्स 0 एनिमी का रहा है. हमारी नीति विवादों को कूटनीति के जरिए बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित रही है. इसका उदाहरण इंडोनेशियाई सरकार द्वारा फ्री आचे मूवमेंट को बातचीत के द्वारा एक अस्थायी शांति प्रदान करना है जो पिछले लंबे समय से अस्थायी रूप से कारगर है. इंडोनेशिया आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को पाटने के महत्व को भी समझता है जो अक्सर
संघर्षों को बढ़ावा देती है। ऐसे में वैश्विक सर्वसम्मति को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया G20 ढांचे के भीतर एक पीस बिल्डर्स नेटवर्क का सुझाव देता है। यह नेटवर्क दुनिया भर के विभिन्न शांति प्रक्रियाओं में सीखे गए सबक को साझा करने के एक मंच के रूप में काम करेगा। इस तरह संघर्ष समाधान के लिए हम पूरे विश्व के लिए व्यापक टूल किट का निर्माण कर सकते हैं। इंडोनेशिया पश्चिमी अमीर देशों के कचरा निस्तारण नीतियों के प्रति भारी आपत्ति जाहिर करता है। ये विकसित देश कचरा निस्तारण की जगह गरीब अफ्रीकी व एशियाई देशों को भेज देते हैं। इंडोनेशिया इस सम्मेलन के जरिए साफ संकेत देना चाहता है कि हम अमीर देशों के कचरे को नहीं रखेंगे। हमने कुछ एक साल पहले सख्त कदम उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया का 200 टन कचरा वापस कर दिया था। इसलिए बाकी विकसित देश भी हमारे अपील को गंभीरता से ले। आखिर में हमें समझना होगा कि शांति हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। हम सब साथ मिलकर विश्व शांति बहाल कर सकते हैं। संघर्ष की रोकथाम और शांति निर्माण पर वैश्विक सहमति बनाकर हम बिना युद्ध के युग का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आप सभी मेरे समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना, इसके लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। कृपया आप लोग अपना प्लेस ले लीजिए एंड नेक्स्ट कंट्रीज जो हैं वो कृपया मंच पर आ जाइए। क्या टर्की के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर वापस आ चुके हैं? नहीं। नेक्स्ट इज जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील एंड इन्हीं के साथ टर्की ज्वाइन करेगा। जापान से हैं आपका अभिज्ञा, इंडिया से हैं सूरज भान, ऑस्ट्रेलिया से हैं सचिव गुप्ता एंड ब्राजील से हैं रूपाली सिंह। इन्हीं के साथ टर्की के इसके बाद है Finance Minister, please call your head of the state. Turkey Finance Minister. कोई बात नहीं, मैं टर्की का इनमें करवा दूंगी। So, सबसे पहले मैं जापान के हेड ऑफ द स्टेट अभिज्ञा को स्पीच के लिए वेलकम करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अभिज्ञा का। Konnichiwa everyone, ladies and gentlemen, esteemed guests and citizens of the world family. Family because it is important for us to together deliver something which has been missing for a very, very long time. We are here to discuss a topic of great importance as it is a huge impact on our lives, our communities, and our future. In a world marked with conflicts and threat to peace, Japan has emerged as an advocate and proactive contributor to facilitate global consensus on conflict prevention and peace building. The land of the rising sun, with its commitment to diplomacy, humanitarian efforts, and multilateral cooperation, has played a vital role in promoting stability and harmony on the international stage. Additionally, Japan's security alliance and soft power, including its influential cultural export, further contribute to its role as a key player in the global peace effort. As already introduced in G7 Hiroshima Summit, Japan, with the help of the international community, wants to build a peaceful world based on cooperation and coordination. Members of the G20 have affirmed the critical importance of poverty and inequality reduction, intensifying their efforts towards achieving the Sustainable Development Goals and fortifying their preparedness for pandemics. As this is a no-war era, our focus should be on money being used for all forms of human security rather than arms. Japan's role in shaping international policies and fostering cooperation among nations demonstrates its commitment to upholding global peace and security. As conflicts persist,
in various parts of the world, it is important for us together to play a major role and make a difference. Thank you. थैंक यू अभिज्ञा। हमारे नेक्स्ट कंट्री है भारत एंड इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सूरज भान शर्मा। सूरज भान शर्मा प्लीज अपनी स्पीच दीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सूरज भान शर्मा। आतुरे वसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठति सह बांधव। हम विश्व में एक परिवार बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और चाणक्य नीति ने इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया है बंधुत्व को, कि जो शमशान राजद्वार और संकट में आपके साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र है। और हम सब इसी भाव का निर्माण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले बात शांति की करते हैं तो पिछले सत्र में भी मैंने बात की कि भारत किस प्रकार सार्वभौमिक शांति की अवधारणा को लेकर चलता है। आर्थिक स्थिरता की बात करें तो यूएन द्वारा एथलेस मेडिसिन को एक काम दिया गया था और उसका काम था आर्थिक दुनिया के आर्थिक इतिहास लिखना। और उसने जो शब्द अपनी रिपोर्ट में प्रयोग किए वो भारत की क्षमता को दिखाते हैं। मैं आपको कोट करना चाहूंगा, ही रिटन दैट कि 1000 सालों तक भारत ने दुनिया को संपदा का वितरण किया, डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने वितरण शब्द का प्रयोग किया। यह भारत की दुनिया को साथ लेने की चलने की आर्थिक क्षमता है। साथियों, जहां तक सुरक्षा और शांति की बात है, भारत की आतंकवाद के प्रति बिल्कुल साफ नीति है। आतंकवाद जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझा देना चाहिए। दुनिया की शांति के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूएन के शांति मिशन में हमारे भारत के योगदान को टेबल करें। सर, ये रिपोर्ट है जिसमें भारत का जो पूरा योगदान है इस पूरी डॉक्यूमेंटेड फाइल में, समय की कमी के कारण मैं उसको कोट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोरोना काल में हम हेल्थ सुरक्षा की बात करें तो कोरोना काल में भी हमने देखा कि दुनिया के ऐसे देश जिनसे बड़े बड़े देश बात भी नहीं करना चाह रहे थे, वहां पर भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को पहले खतरे में रखते हुए उनकी सुरक्षा की। ये भारत का विचार है। जहां तक आर्थिक मामलों की बात है, भारत का विचार दरिद्र में नारायण देखने का विचार है। हम दरिद्र की सेवा करके नारायण को प्राप्त होने वाले देश हैं। ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ के जो डिफरेंस है, इस डिवाइड को खत्म करते हुए हम ग्लोबल फैमिली की बात करने यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले हम सभी राष्ट्रों से ये प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें कि परम वैभवन में तुम एतस्व राष्ट्रम समर्था भवत्वा आशीषाते व्रतम। हम अपने अपने राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए ईश्वर से कामना करें और समर्थ बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्पीच के लिए नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सचिव गुप्ता। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए सचिव गुप्ता का। My friend and honorable president of the present G20 summit, Prime Minister of Bharat, Narendra Modi ji, and other delegates, good afternoon to all. As I was talking to my friend, I came up with a Subhashit. He actually taught me that Tretayam mantra shakti cha jnana shakti krite yuge द्वापरे युद्ध शक्ति च संघो शक्ति कलो युगे। So you understood that संगठन में ही शक्ति है। So I'll start with and I'm very proud of the Australia's commitment to the peace building and reconciliation. And in addition to the commitments made in the New Delhi Declaration, I would like to highlight the following areas where I believe we all, the world needs to keep focus on. First is the role of the women and youth in this era. Actually, we Australians believe that it's very essential in the peace building and reconciliation. We need to empower our women and youth the more, because the women and youth and children, actually everybody gets affected when the war happens. So we need to empower them all. Second is the importance of the education. Education is essential for the peace building and reconciliation. We need to invest heavily since we are holding the 85% of GDP of this world. So we need to invest heavily in this education sector, and especially for the girls and the women. Lastly, I would like to say that everything has a root cause, and this war has also, this conflict also has a root cause, and that root cause is poverty, inequality, and climate change. We all need to address those root causes to prevent conflict from happening in the first place. I believe that by focusing on these areas, we can make a real difference in the world. By working together, we can create a more peaceful and prosperous world for all. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव जी। नेक्स्ट है ब्राजील
एंड ब्राजील को रिप्रेजेंट कर रही हैं रूपाली सिंह। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए रूपाली सिंह का। Good afternoon, everyone. In this session, I'll be focusing on two major concerns that is affecting the global peace and reconciliation. That is equitable collaboration of global North and global South. And the second was regulating non-state actors through concerted efforts. I'm starting with the first. In order to bring about global peace, it is imperative that the international community work towards reforming global institutions which play a crucial role in preventing and resolving conflicts, and also an involvement of young people from both the global North and global South can bring a fresh and diverse perspective to the table. Y20 can help to ensure that the G20 policies are inclusive and equitable, taking into consideration the unique challenges faced by young people from the global South. And the second is that to regulate non-state actors through concerted efforts. Countries should cite their differences and cooperate with each other in order to defeat terrorism. Well, yeah, I would like to appreciate India, the way it handles its situation of these kind of matters. Anyway, Brazil's role in the fight against international terrorism has focused on international cooperation, the signing and ratification of international conventions on terrorism, and the adoption of national laws to these instruments. The influence and power of non-state actors like terror organizations have become so strong that they can challenge sovereign states and even attempt to establish their own states. This highlights the importance of continued efforts towards peace building and reconciliation to bring about a world without war. Thank you, everyone. थैंक यू रूपाली। नाउ मैं टर्की से अमृतांश भारती को बोलना चाहूंगी कि वो अपनी कंट्री की हेड ऑफ द स्टेट स्पीच दें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अमृतांश भारती का। Merhaba once again. Last time I didn't get enough time to talk the whole detail that I wanted to. So as I was saying, Turkish market is open for all the conflict hit area sponsored startups, the business, and we encourage that there should be more business in conflict hit area so that we can get out the trap that they have got into the extremist and radical trap. Apart from that, I would like to urge all the nations to regulate the blockchain-based currency so that we can secure our Web3 and the dark web from this money getting into the laundering of terrorism. And one of the burning issue that right now we are facing in the whole world, and that will become bigger in coming years, that is to regulate the AI. Artificial intelligence need to be regulated, and we should be the very first one to make a step on it, decide ourselves that what we can do to regulate its effect, that its negative effect that it can have on our society. Thank you. थैंक यू अमृतांश। अब मैं सूरज से जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सर्वसहमति से एक प्रपोजल पास हुआ था उसके बारे में 30 सेकंड में इंट्रोड्यूस करें। इस सभा की भी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस सभा की अध्यक्षता के रूप में भारत ने जो है एक प्रपोजल सबके सामने रखा, और मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा कि सभी जो सहभागी देशों के प्रतिनिधि हैं उनकी सर्वसहमति से विदाउट एनी फुटप्रिंट और विदाउट एनी क्लॉज वो प्रपोजल पास हो गया है। प्रपोजल सर आपकी टेबल कर दिया गया है, तो एक बार सभी देशों के लिए एक बार स्वागत के लिए तालियां इस प्रपोजल के लिए जो सर्वसम्मति से आपका पास हुआ। इसके बाद मैं मंचासीन सभी हेड ऑफ द स्टेट से कहूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करें, और फाइनेंस मिनिस्टर से कहूंगी बी रेडी विद योर फ्लैग। पहला है आपका टर्की से अभिषेक कुमार, फिर आपका यूके से राही सिंह, फिर आपका यूएस से विपिन तिवारी, एंड यूरोपियन यूनियन से मोहम्मद सरफराज।
एंड रशिया से आपका आदित्य. Next countries, please be ready after this. सबसे पहले मैं टर्की से अभिषेक कुमार को बुलाना चाहूंगी कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कृपया अपनी स्पीच दें. जोरदार तालियों से स्वागत करिए अभिषेक कुमार का. Namaskar, good evening, salam. I will further continue my speech with DLT technology. A blockchain is a digital ledger of transactions that are distributed across the entire network of computers or nodes on the blockchain. It creates identically recorded data and transactions in multiple locations. All transactions are immutably recorded and are time and date stamped. It will result in highly transparent, secure, tamper-proof, and need for third party is eliminated and inherently decentralized. Distributed ledgers and Bitcoin cryptos use the same technology. I will like to bring your attention towards Green Finance Initiative. The Green Finance Institute is accelerating the transition towards an environmentally sustainable, resilient economy by catalyzing investment in net zero and nature positive outcomes. Thank you. In hope of better future for all across the globe as a family. Vasudev Kutumbakam. Thank you Abhishek. Next is UK and UK से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं राही सिंह. राही सिंह कृपया अपनी फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दीजिए. जोरदार तालियों से स्वागत करिए राही सिंह का. Good afternoon, everybody. This is Jeremy Hunt from the United Kingdom, and I'm representing UK. If we talk about the upliftment of the state, not only United Kingdom, through the views of economy, we have many important key points. But to start with the first, if we talk about is the conflict prevention and peace building. Why do we actually need peace? This raises a number of questions in our mind. Basically, we can say no peace is equal to warfare, and warfare means total loss of economy. The finance ministers of every country kindly take into the consideration enforcement, monitoring, and awareness raising mechanism under the Security Council resolution on the protection of civilians in armed conflicts. UK is making peace with other countries and establishing good relations with other countries over the globe. The second main important topic I would like to talk about is the trade, whether it can be import or export. I must say only export and import can maintain the good relations between the countries. And at last, I would like to say United Kingdom will work for the peace building and will definitely develop good economic relations with all the countries. Thank you. Thank you Rahi. Next हमारे representative हैं US से and विपिन तिवारी. विपिन तिवारी का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी. अपनी स्पीच के. The G20 serves as a platform of global economic cooperation where we come together to address the most pressing financial challenges facing around the world. As the United States, we recognize the significance of this forum and the responsibility it entitles. We are committed to working collaboratively with the economic growth, stability, and prosperity for all. First and foremost, we must prioritize the inclusive growth. Inclusive growth means, as my friend from Indonesia has said, that the tons of garbage has been sent to their countries. So making all countries to that level so that they can compete, because if they want to compete, they should have the power to say no to the other countries. Secondly, we must challenge the post climate changes. Climate changes is very taking place in this economy that are destroying many economies. Just like that, sustainable and
low carbon economy, we are committed to implementing policies that promote clean energy, foster innovation, and green technology. Thirdly, we must strengthen international financial institutions and regulatory bodies so that every country that wants finance to grow in their economy, they can take loan easily and faster. Furthermore, we must prioritize the information technology. Information should be free for all countries, and in exchange, it is very necessary. In conclusion, the United States is fully committed in playing an active, constructive role within the G20. We believe that prioritizing inclusive growth, addressing climate change, strengthening international financial institutions, embracing digital transformation, and promoting international cooperation, we can build prosperous and sustainable future for all. Thank you to all of you. Thank you. Next is European Union, and European Union is represented by Mohammad Sarfraz. So जोरदार तालियों से स्वागत करिए मोहम्मद सरफराज का. Good afternoon, everyone. Once again, today I would like to discuss the pivotal role of the European Union Finance Minister. In the G20, of the context of the G20 event, as many of you may know, is formed where leaders and finance minister from the world largest economics together to discuss global economics issue. The finance minister of the European Union plays a crucial role in this discussion for several reasons. Firstly, the European Union is now of the largest economics blocks in the financial minister, representing a significant portion of the global economics and discussions and policies discussed and adopted at the G20 have far-reaching implications. For the world economic, both the finance minister is carrying the weight of the shaping and the outcomes of the discussion. Secondly, the European finance minister plays a vital role in promoting financial stability within the European Union itself. The financial health of the European member states is closely interconnected and the financial minister. In conclusion, the European Union finance minister role at the G20 event is in investments, and they are represented on the one of the world's large economics blocks, contribute to global financial stability, champion stability, and foster international cooperation. Thank you. Thank you, Sarfraz. Next is Russia, और रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आदित्य. सो जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदित्य को. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा गीता श्लोक सिर्फ भारत में दे सकते हैं, और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया G20 में, भारत में G20 का कार्यक्रम कराने का. आज रूस की जीडीपी 2.63 बिलियन US डॉलर है. जब सोवियत संघ टूटा था तो हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट -5.05 था, लेकिन 2000 ईस्वी में ये बढ़कर 10 हो गया. कोरोना में भी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट +2.20 रहा, लेकिन 2022 में -2.07% है. भारत रूस का व्यापार एक दोस्ती का व्यापार है. अगर हम लोग कोविड काल के पहले की बात करें तो औसतन 9675.85 US डॉलर का व्यापार हुआ था, लेकिन कोविड के बाद यह बढ़कर 70,632.92 US डॉलर का हो गया. इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टेक्नोलॉजी में रशिया रैंक 96 में से 17 है, और हमारी कुछ वर्ल्ड को लेकर के पॉलिसीज बनी हुई है. Russia has emphasized import substitutions policies to reduce its dependence on foreign goods and promotes domestic industry. The government has implemented measures such as import traffic subsidies and preferential treatment for the domestic producers to encourage the production and consumption of the locally manufactured goods. Russia has pursued various bilateral and regional trade agreements to expand its trade relation. For example, Russia has signed free trade agreement with the countries such as Siberia, Vietnam, Iran. These agreements aim to reduce trade barriers, promote economic cooperation, and increase market access and Russian exports.
आशा करता हूँ कि यहाँ पे G20 पे जितने भी देश आए हुए हैं वे इस चीज से सहमत होंगे और साथ देंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदित्य। मैं नेक्स्ट राउंड के लिए रेस्ट ऑफ द कंट्रीज को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सभी कृपया अपना फ्लैग जरूर लेकर के जाएं। नेक्स्ट कंट्रीज आर जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड इंडोनेशिया। इसी क्रम में सबसे पहले मैं इंडोनेशिया की फाइनेंस मिनिस्टर रजनी को बुलाना चाहूंगी कि वो अपनी स्पीच दें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए रजनी का। Good afternoon, one and all. This is Rajni Sharma, Department of Social Work, represent as Finance Minister of Indonesia. As the Finance Minister, it is crucial for me to shed light on the pressing issue of war and their determinant effect on Indonesia's economic status. The devastating effect of war on the economy will break havoc on the economic stability of nation. They result in some economic destabilization, a sharp increase in public debt, and decline in investment and economic growth. Global economy has not been recovered from the pandemic. We are facing new race, that is Ukraine war. This war has created a spillover which is very critical for all the people and humanity. Food crisis is already accelerated. With this challenge, the question to all of us is how we could carry through collective commitment to respond to humanity's greatest challenge, that is climate change. As a finance minister, I believe to promote energy by creating opportunities and working together to pursue resilience and sustainable growth. As we embark on the journey toward on the era of no war, let us remember that peace is not a destination, but it is a continuous process. It requires dedication, patience, and collective effort of every Indonesian citizen. Together, we can overcome the challenges that lie ahead and create a brighter, more harmonious future for generation to come. Thanks. रजनी, अब मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी इंडिया के यानी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर दीपेश। मैं दीपेश, भारत के आर्थिक व्यवस्था का प्रतिनिधि इस दूसरे सत्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले सत्र में हमने अंतरराष्ट्रीय पेमेंट और डिजिटलाइजेशन की बात की थी, पर उससे पहले मैं कुछ आंकड़ों पर नजर डालना चाहूंगा। 1997 में हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग 24.2% थी, जो कि आज 2022 में 31.4% हो चुकी है। टैक्स टू जीडीपी परसेंट की अगर बात करें तो 1997 में 6.8% थी है और आज 2022 में 7.1% हो चुकी है। खैर, ये सब तो कहने की बात है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 1997 में 193 मिलियन टन था, वहीं आज 2022 में 308 मिलियन टन है। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भारतीय मुद्रा में पेमेंट की लेन देन करना चाहते हैं, लेकिन आज भी ये हमारी कैसी विडंबना है कि कोई भी बात अगर हम कहते हैं, कोई आंकड़ा बताते हैं तो उसमें यूएस डॉलर का ही प्रयोग किया जाता है। इसी चीज को खत्म करने के लिए यूपीआई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर रखने की बात की जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में अभी हाल ही में जापान की एक कंपनी हितैषी पेमेंट सर्विसेज ने मुंबई में सबसे पहला यूपीआई एटीएम बनाया है, जो कि 4 दिन पहले लॉन्च हुआ। इतना ही नहीं, G20 में भारत सऊदी अरेबिया के बीच इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात चली, जिससे ऊर्जा से लेकर इंटरकनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से लेकर वित्त और सुरक्षा हर क्षेत्र में कारगर साबित होगा। हमारे जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो लिथियम का सबसे बड़ा खजाना यहाँ पर मिला है, जो कि 5.9 मिलियन टन है और आने वाले भविष्य में 80% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ये समस्या को सॉल्व कर देगा। इतना ही नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व
बायोफ्यूल की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इन सब के प्रति भारत स्विच करे, इस कारण से हमारे बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से बढ़कर 5वें स्थान पर आ गई है और हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है। अतः अंत में मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आप सभी की असीम कृपा से हमारी यह विजयशाली संगठित कार्य शक्ति हमारे धर्म का संरक्षण कर इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में समर्थ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिपेश कुमार। मैं बुलाना चाहूंगी जापान के फाइनेंस मिनिस्टर रंजन वर्मा को। कृपया अपनी स्पीच दें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए रंजन वर्मा का। Good afternoon, everyone. I, Shunsuke Suzuka, Good afternoon, everyone. I, Mr. Suzuki, Finance Minister of Japan, invite you to join me on a journey of exploration and discussion as we delve into a topic that holds a significance for all of us. Our economy journey is nothing short of remarkable. In the post-World War era, we underwent the rapid reconstruction and industrialization, transforming itself into one of the world's largest and most advanced economies. This remarkable transformation, often referred to as the Japanese economic miracle, which was driven by the factors such as efficient manufacturing practices and a focus on export-oriented growth. The Group of 20 comprises of the world's largest and most influential economies, representing a significant portion of global economic output. Our trade relationship with the G20 member countries are pivotal to its economic well-being and have a substantial impact on the global economic landscape. Our trade relationship with these G20 countries exemplify its role as its major global economic player. These interactions contribute to the exchange of goods, technological advancement, and economic stability on a global scale. And as an effort towards international peace building and reconciliation, earlier this year, Prime Minister Kishida in March traveled to India to meet his close ally of Indo-Pacific partner, Prime Minister Modi, and announced a free and open Indo-Pacific, including helping emerging markets in the region, which is the Southeast Asian region. Also, Japan's commitment to developing world, Prime Minister Kishida spent a week early in May visiting 4 African countries, Egypt, Mozambique, Ghana, and Kenya, respectively. In conclusion, Japan's position as a major economic power and its extensive trade connections with the G20 highlights its significance in the global economy. Its economic strength, technological power, and commitment to international trade partnership make Japan a vital player in shaping the world's economic landscape. Japan's contribution extends far beyond its border, impacting industries, market, and economics around the world. Thank you. थैंक यू। इसी क्रम में मैं ऑस्ट्रेलिया से इनवाइट करना चाहूंगी स्तुति शर्मा को। कृपया अपनी स्पीच दें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए स्तुति शर्मा का। Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. It is a famous quote of Albert Einstein. Good afternoon to all the esteemed members of the G20 group. Sincere greetings from Australia. I stand before you today as the Finance Minister of Australia to highlight the financial contributions that our nation has made towards peace building. Australia, as one of the founding members of United Nations, has always supported the ideals of peacekeeping and no war. Over the past decade, Australia has provided substantial financial support to international peacekeeping efforts. Since 2010, we have contributed over $1 billion to UN peacekeeping missions over the world. These funds have been essential for sustaining peacekeeping operations, facilitating conflict resolution, and protecting civilians in conflict-affected areas. Australia was instrumental in the diplomacy that led to Cambodian peace settlement. We made a major contribution to the UN Transitional Authority in Cambodia, including sending the first military contingent and providing the commander of the military component. We have always contributed to Commonwealth missions in Zimbabwe and Uganda and continues to deploy personnel to international stabilization in Afghanistan. In conclusion, Australia has always made substantial financial contributions towards peace-building initiatives on international level. We are actively ushering in an era of lasting peace. I repeat, we are actively ushering in an era of lasting peace.
Australia remains committed to supporting global peace building efforts and standing as a steadfast partner in the pursuit of a more peaceful and prosperous world. At last, I would like to say education is quite simply peace building by another name. It is the most effective form of defense spending there is. So, educate the youth and protect the peace. Thank you so much. थैंक यू सो मच दीदी एंड इसी रो में हमें लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाना चाहूंगी जो कि हैं सचिन कुमार। कृपया अपनी स्पीच दीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सचिन कुमार। I am Sachin Kumar from Department of Chemistry and Chemical Sciences. I am representing Finance Minister of Brazil. Once again, good afternoon, Mr. President Y20, Excellencies and distinguished members of the forum. Coming from a multicultural and ethnically diverse country, Brazil, in my previous speech, I put forth that we should not just focus on war from a macroscopic view or level, but also from a microscopic one. I asked all of you to focus on conflicts and crime based on gender, religion, ethnicity, culture, and more, which have caused serious disruption to the global peace. Although these issues doesn't make big global headlines like wars between two countries, but the economic and societal impact of these can be asked from the countries which have a history or have an ongoing civil war. So today at this table, under the presidency of India, Bharat, who has taught us about Vasudev Kutumbakam, we should come together economically as one family for peaceful future. Thank you. थैंक यू सचिन। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया अपना स्थान ले लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इफेक्टिव स्पीचेस का लिए। कृपया 5 मिनट धैर्य और शांति बनाए रखें। पांच मिनट के लिए मैं मंच सूरज को देना चाहूंगी कि वो प्रपोजल को तब तक इंट्रोड्यूस करेंगे। I would like to invite I would like to invite Dr. Neena ma'am. Please come to the stage for some announcement. Thank you so much. Dr. Amita. And thank you, Dr. Ritu, for giving me a chance to speak to the students. Yeah, I really applaud your efforts, and I'm so glad to see so many people from Dialectica. And I wish to give them a big round of applause. I have a request that I saw so many of the other students speaking so well, and they are not members of Dialectica, and I'm very sorry about it. And I invite most of you to please join the debate club and make it a more dynamic space, because we need speakers like you with conviction. And we are having an event with ma'am's permission on Friday itself. That is going to be a kind of a welcome for the first semester BTech students. Also, we want semester, but we would like everybody to join in. Anybody and everybody who would like to come. All right. So this is basically first semester because they are freer. Their exams are a little later. But please join in and give your names for the debate. We'll soon get in touch with you. And join in large numbers to make this a real happening space. I mean, that's the need of the hour. That's what the Prime Minister wants. That's what the country needs. The country needs you. So thank you so much. I hope we'll get you in large numbers. Thank you, ma'am. Over to you. जब तक परिणाम आते हैं, मैं जो इस आज का समिट का जो प्रपोजल था मैं आप सबको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। To the organizing committee of this Yuva Manthan Summit, the subject is about the proposal of Bharat, one earth, one family, one future. Dear honorable members, respected teachers, and all the dignitaries who are present here, I am speaking on the behalf of Bharat to propose the thematic framework for the
for the Y20 summit organized here under the theme One Earth, One Family, One Future. In a world facing unprecedented challenges, Bharat believes that fostering global unity and cooperation imperative. Our proposal centers on the three pillars. The first one is environmental stewardship. Bharat commits to sustainable development and urges fellow nations to reduce carbon emissions, protect biodiversity, and transition to renewable energy sources. Together, we can mitigate climate change and safeguard our shared planet. Humanitarian outreach. Bharat seeks to enhance global health, education, poverty, alleviation efforts. By nurturing the welfare of all, we can create a world where every individual has the opportunity to grow and to thrive. And our last one is economic resilience. Bharat advocates for inclusive economic growth and equitable trade policies that benefit all the nations. Through fair trade practices and collaborative economic strategies, we can build a prosperous and interconnected future of the whole world family. Bharat eagerly anticipates fruitful discussions and collaborations at this summit with the belief that one earth, one family, one future can guide us toward a more harmonious and sustainable world. Yours sincerely, Suraj Bhan Sharma, Prime Minister Representative, Bharat. Team DSW, kindly come to the dais. I request to Team DSW.
पार्टिसिपेंट्स की सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज का कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में, और आप लोगों की पार्टिसिपेशन ने इसको सक्सेसफुल बनाया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इस तरह का हम माहौल क्रिएट करते रहेंगे, एक मिसाल बनेंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। और ये जो हमने बाहर Y20 में जो आप सबकी फोटोग्राफ्स लगी हैं, ये लगी रहेंगी, प्रॉमिस। टिल द नेक्स्ट इवेंट। मैं एक एक करके पार्टिसिपेंट का नाम लूंगी, क्योंकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन है तो सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। तो कृपया जिनका जिनका नाम लिया जाए वो आप लोग नीचे आ जाओ, नीचे आ जाइए। So Rahul Singh, head of the state. Thank you so much, Rahul, for the active participation. Priyanka Singh, next. Sachiv Gupta, next. This is the participation certificate. Rupali Singh, Sarfaraj, Saurabh Singh, Saurabh Kumar, Alok Raj, Alok Raj, Suraj Bhan, Ankit Mishra after Suraj, Ankit Mishra, Vikas Kumar, Wasim Raza, Vijay Kumar, Sneh Devi, Amritansh, Abhishek Kumar, Ankit Kumar Prajapati, Shiv Kumar Singh, Arpit Nagra, Amit Jasrothia, Abhigya, Ranjan Verma, Harsh Pratap Singh Hada, Vipin Tiwari, Kasturi, Anita, Nahila Tabassum, एक कस्तूरी का सर्टिफिकेट दे दो, कस्तूरी का सर्टिफिकेट दे दो। मोहम्मद सरफराज, कस्तूरी अनीता का भी ले लो आप। मोहम्मद सरफराज, नंदिनी, राही सिंह, अमित जसरोटिया, अर्पित नागर, शिव कुमार सिंह, शाश्वत चक्रवर्ती, आयुष मोदी,
स्तुति शर्मा, सचिन कुमार, आदित्य, इरफान चौधरी, स्तुति शर्मा, स्तुति का दे दीजिए प्लीज, बेटा वो स्तुति का है। आपका क्या नाम है? सचिन, सचिन का दे दीजिए प्लीज। इरफान चौधरी, वनिकिता, वनिकिता, आयुष मोदी, आकृति, हरिविशेष, हरिविशेष, दीपेश, दीपेश, रजनी शर्मा, शिव कुमार सिंह एंड विजय कुमार, ये जो आपके फोटोग्राफ्स हैं ये हम आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है? ये जितने भी फोटोग्राफ्स हैं हमारे इस कार्यक्रम के, जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे हम ये अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है? येलो में ये कलर येलो में ठीक है, भगवान ऐसे ही प्रभाकर जी, नमस्ते। जूही गुप्ता, आशीष चौधरी, राशु शर्मा, नंदिता, MCNM डिपार्टमेंट, डॉक्टर नीता रानी, मीनाक्षी, डॉक्टर भरत भूषण जी, मैंने कहा जगह जगह सर्टिफिकेट बटे ले ले। सूरज जी एक बार
इसके बारे में डॉक्टर रत्नेश कुमार यादव जी। उज्जवल कुमावत। सर इनकी बसेस जाने वाली हैं और रिजल्ट का इंतजार है। अब देखिए जब आपका रिजल्ट निकल नहीं रहा है ना तो उसके बहुत सारे कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सभी इतने अच्छे थे कि रिजल्ट निकालना मुश्किल है, लेकिन अब हमने इनको बुलाया है ना, हमने इनको थोड़ा सा अभिनंदन भी किया इनका, तो ये भी तो अपना काम करके जाएंगे ना, जिस काम के लिए इनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये एक औपचारिकता है कि इनको भी एक रिजल्ट तो देना है। और देखिए रिजल्ट में कौन आगे आया कौन पीछे वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग इतनी अच्छे से पार्टिसिपेट किए ये मैटर करता है। तो अब आपके लिए तालियां बजाने के लिए कोई नहीं, अपने आप के लिए खुद बजाए, जोर से बजाओ जरा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।